हेलो स्टूडेंट्स आज भिडियो रे आमे पढ़िबा एक्सरसाइज 7J रो क्वेश्चन नंबर 3 रु क्वेश्चन नंबर 8 पर्यंत। लास्ट वीडियो रे आमे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करथिले, तो आज वीडियो रे क्वेश्चन नंबर 3 रु क्वेश्चन नंबर 8 पर्यंत करबा। तो क्वेश्चन नंबर 3 रे फंक्शन टे अछि, फंक्शन अछि tan x fx इक्वल टू tan x at x इक्वल टू पाई बाई 2। ए फंक्शन टार डिफरेंशिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाई 2 रे आमे चेक करबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर आमे कंटिन्यूटी चेक करबा। कंटिन्यूटी रे फर्स्ट फंक्शनल वैल्यू आमे बाहर करबा, देन लिमिटिंग वैल्यू बाहर करबा। जनरली आर फंक्शनल वैल्यू कोन हबो f at पाई बाई 2, दैट इज tan पाई बाई 2। आमे जानिचु tan 90 रो वैल्यू अनडिफाइंड, tan पाई बाई 2 इज इन्फिनिटी। आर फंक्शनल वैल्यू does not exist, so this function is not continuous at x equal to pi by 2. So this implies tan x is not continuous at x equal to pi by 2। जेतु ये फंक्शन टे पाई बाई 2 रे कंटिन्यूअस नुए, ये केबे पाई बाई 2 रे डिफरेंशिबल हबनी। तो डिफरेंशिबल की चेक करिया दरकार नाही, एथुरु हमें कंफर्म करदबा। काहे कि ना डिफरेंशिबिलिटी पाई कंटिन्यूटी होची नेसेसरी कंडीशंस। जेतु कंटिन्यूटी हेउनी x equal to pi by 2 रे, ता माने दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिबल एट दैट पॉइंट। So this implies fx equal to tan x is not differentiable at x equal to pi by 2. Not differentiable at x equal to pi by 2. So complete हे गला कंटिन्यूटी रु आमे कंफर्म कर देलु जे डिफरेंशिबल भी नुए। नेक्स्ट आमे क्वेश्चन नंबर 4 को जिबा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 रे फंक्शन अछि cot x fx इक्वल टू cot x आमे चेक करबा at x इक्वल टू पाई बाई 2 रे। ओके, सो फर्स्ट कंटिन्यूटी चेक करबा। कंटिन्यूटी at पाई बाई 2 रे, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यू f पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू cot पाई बाई 2। cot पाई बाई 2 रो वैल्यू होची 0, tan 90 infinity but cot pi by 2 is 0। फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करूची जार वैल्यू हैला 0। ओके, लिमिटिंग वैल्यू बाहर करबा। लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 cot x। तो आर भी वैल्यू हमें cot x को लिखि परिबा, डायरेक्टली पुट कर परिबा। x टेंड्स टू pi by 2 दैट इज cos x by sin x। So that is cos pi by 2 divided by sin pi by 2। cos pi by 2 value la 0 by 1, answer is 0। तो the functional value 0 and limiting value भी 0। तो hence our limiting value limit x tends to pi by 2 fx equal to f pi by 2 that is equal to 0। This implies fx is continuous at x equal to pi by 2। तो हमारा कंटिन्यूटी चेक कले ए cot x फंक्शन pi by 2 रे कंटिन्यूअस होची, किंतु एठी हमें कहि परिबानी जे कंटिन्यूअस pi by 2 रे होची माने डिफरेंशिबल हबो बोली। जदि कंटिन्यूअस न हेउ थांता त डिफरेंशिबल हबोनी, एटा ट्रू। बट कंटिन्यूअस होची माने डिफरेंशिबिलिटी हेई पारे न हेई भी पारे, सेति हमें डिफरेंशिबिलिटी चेक करिया पड़िबो। सो आर आमे डिफरेंशिबिलिटी चेक करबा at x इक्वल टू पाई बाई 2 रे। डिफरेंशिबिलिटी तो फंक्शन टे हमर अछि cot x, हम चेक करछि at x इक्वल टू पाई बाई 2 रे। तो डिफरेंशिबिलिटी चेक करिया पय फर्स्ट होछि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव lst दैट इज f डैश पाई बाई 2 माइनस आर आमे फार्मूला अछि लिमिट h tends to 0
f pi by 2 minus h minus f pi by 2 divided by minus h. LSD formula h tends to 0, fc minus h minus fc divided by minus h. Here c is pi by 2. So this is equal to limit h tends to 0. जेतु फंक्शन टा हमर अछि fx अछि cot x तो एठी x प्लेस रे अछि pi by 2 minus h. सो हमें पुट कले आसीबो cot pi by 2 minus h minus cot pi by 2. Cot pi by 2 is 0, it's minus h. So limit h tends to 0. Cot 90 minus theta is tan theta, so this is tan h by minus h. So our limit है minus 1. So LSD बाहरिला minus 1. एबे हमें RSD चेक करिबा. RSD equal to f dash pi by 2 plus. So say limit formula use करिबा. Limit h tends to 0 f pi by 2 plus h minus f pi by 2 divided by h. This value equal to limit h tends to 0 cot pi by 2 plus h kind of function अछि हमरो cot x place रे अछि pi by 2 plus h. So this value is cot pi by 2 plus h minus 0 divided by h. Okay, cot 90 plus theta. Cot 90 plus theta is tan theta. कहेंगे ना एटा sorry, cot 90 plus theta is minus tan theta because it second quadrant रे अछि. तो cot 90 plus theta is minus tan theta. So this is minus tan h divided by h, and this value is also equal to minus 1. So it LSD RSD same अछि, ताने this function differentiable होछि. LSD equal to RSD, this value equal to minus 1. So fx equal to cot x is differentiable at x equal to pi by 2. तो हमें जानिलु फंक्शन cot x pi by 2 रे कंटीन्यूअस भी होछि and differentiability भी होछि. सो हमें एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. क्वेश्चन नंबर 5 जोथरे की अछि. क्वेश्चन नंबर 6 रे फंक्शन अछि fx equal to x divided by 1 plus mod x. हमें चेक करिबार अछि at x equal to 0. At x equal to 0 रे. तो सॉल्यूशन रे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंक्शन टी को सिंप्लीफाई कर लिखिबा. 1 plus mod x अछि आर ए फंक्शन को हमें एमती लिखि परिबा x by 1 minus x when x is less than 0 and x by 1 plus x when x is greater than equal to 0. जेतो mod अछि mod रो वैल्यू plus x ही पारे minus x भी पारे. So हमें फर्स्ट इट्स कंटिन्यूटी चेक करिबा. कंटिन्यूटी f0 is 0 by 1 plus 0, तो 0 by 1 आंसर इज 0. लिमिट बाहर करिबा तो LHL जेतु दुईटा अलग अलग वैल्यू छै LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एडी फंक्शन रखिबा x by 1 minus x. So directly value put to 0 by 1 minus 0 to 0. RHL equal to limit x tends to 0 plus x divided by 1 plus x. So that is 0 by 1 plus 0, 0 by 1, answer is 0. So LHL equal to RHL equal to functional value, that value equal to 0. This implies fx equal to x by 1 plus mod x is continuous at x equal to 0. तो एबे हमें आर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करबा. जान लीजिए फंक्शन कंटीन्यूअस हो at x equal to 0 रे. एबे आर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करबा. डिफरेंशिएबिलिटी
f dash 0 minus. So limit h tends to 0, f minus h minus f0 divided by minus h. Formula is f0 minus h, 0 minus h minus h. So it directly function रे हमें value put कले, we got f minus h is minus h divided by 1 plus minus h रो mod f0 is 0 divided by minus h. So that is limit h tends to 0. This value is minus h divided by minus h into 1 plus minus h ro mod is plus h. So minus h cancel out. So 1 by 1 answer is 1. The LSD got 1. Similarly RSD that is equal to, here this is LSD, RSD equal to f dash 0 plus. Okay, this value equal to limit h tends to 0, f0 plus h is fh minus f0 divided by h. So that is equal to limit h tends to 0, fh is h divided by 1 plus h ro mod minus 0 by h. That is limit h tends to 0, h divided by h whole into 1 plus h ro mod is h. So h cancel. That the value is 1 by 1, answer is 1. So here LSD equal to RSD, LSD equal to RSD equal to 1. So fx equal to x by 1 plus mod x is differentiable at x equal to 0. एबे हमें क्वेश्चन नंबर 7 को जबा. क्वेश्चन नंबर 6 रे हमें कंटिन्यू डिफरेंशियल चेक कले. बे क्वेश्चन नंबर 7 रे अछि fx इक्वल टू x sin 1 by x is less than equal to 0, x equal to 0. A function रो आमे continuity and differentiability check करिबा at x equal to 0 रे. तो first of all continuity f0 equal to 0, limiting value limit x tends to 0 fx, that value is limit x tends to 0 x sin 1 by x. आर लिमिट आम करचे जार वैल्यू होची 0 हबो, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 by x. This value 0 into r value oscillating in between -1 to 1, that is a finite value, but this value lies in between -1 to 1. So 0 into that particular number will got 0. So this function is continuous, hence limit x tends to 0 fx equal to f0 equal to 0. So fx is continuous at x equal to 0. So we are differentiability check करिबा. differentiability रे अछि हमें LSD RSD बार करिबा, that is f dash 0 minus LSD. This value equal to limit h tends to 0 f minus h minus f0 divided by minus h. Limit h tends to 0
minus h, f minus h is minus h sine 1 by minus h. f0 is already 0 given. So now limit h tends to 0, minus h minus plus the sine 1 by h, sine of minus 1 by h is minus sine 1 by h, so minus minus plus, so h sine 1 by h divided by minus h is cancel, so limit h tends to 0 minus sine 1 by h. So its limit does not exist because its value oscillating in between minus 1 to n 1, so limit does not exist. Since its LSD does not exist, that means this function is not differentiable at x equal to 0. Hence fx is not differentiable at x equal to 0. Then आमे आरो last question करिवा, question number 8, exercise last question, question number 8, जाके अच्छी fx equal to 1 minus e to the power minus x divided by x when x is not equal to 0, and 1 when x equal to 0 at x equal to 0. आमे ए फंक्शन रो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिवा at x equal to 0 रे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूटी रे अछि f0 equal to 1, तो लिमिटिंग वैल्यू बाहर करिवा, लिमिट x tends to 0 fx, limit x tends to 0 1 minus e to the power minus x divided by x, that is equal to limit x tends to 0, तो 1 minus 1 by e to the power x divided by x, limit x tends to 0, तो e to the power x minus 1 by x e to the power x. So that is equal to limit x tends to 0 e to the power x minus 1 by x गोटे पार्ट कर परिबा into limit x tends to 0 1 by e to the power x गोटे करिबा. आर फार्मूला अछि, आर वैल्यू होछि 1 into this is 1 by e to the power 0 is 1, तो आंसर is 1. So limiting value is 1, functional value is 1, hence function is continuous. Hence limit x tends to 0 fx equal to f0 equal to 1. So fx is continuous at x equal to 0. आमे आरो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिबा at x equal to 0 रे. डिफरेंशिएबिलिटी at x equal to 0. तो LSD is f dash 0 minus formula, तो limit h tends to 0, f0 minus is f minus h minus f0 divided by minus h. This value equal to limit h tends to 0, this is minus h, since function अच्छी 1 minus e to the power minus x, so 1 minus e to the power minus of minuses, that is plus h, divided by minus h minus f0 is 1. Okay, so this is limit h tends to 0, तो LCM गला minus h, LCM गला पर तळु को आसिले जो plus h square, तो 1 minus e to the power h minus plus h. So directly आर वैल्यू करले पुट करले which is 0 by 0, this is in the form of 0 by 0, तो हमें easily आर लिमिट यूज कर परिबा. लिमिट h tends to 0
एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करवा दिस इज 0 माइनस e to the power h plus 1 by 2h एल हॉस्पिटल रूल एल हॉस्पिटल रूल जिते 0/0 फॉर्म हुए ऊपर डेरिवेटिव बाहर डिवाइडेड बाय तलर डेरिवेटिव बाहर तो 1 डेरिवेटिव 0 माइनस e to the power h plus 1 by 2h एबे जदि आम डायरेक्टली वैल्यू पुट करचे ये भी 0/0 फॉर्म ऑलरेडी होची सो अगेन अप्लाइंग द एल हॉस्पिटल रूल लिमिट s tends to 0 that is minus e to the power h ये तो 0 divided by 2 हमें 0 पुट कले आर आंसर आसीगला 1/2 सो आम यार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पाइले -1/2 एबे तार राइट हैंड डेरिवेटिव बाहर करबा RHD that is f dash 0 plus okay which is equal to limit h tends to 0 f0 plus h is fh minus f0 divided by h so limit h tends to 0 fh रो वैल्यू होची 1 minus e to the power minus h divided by minus h सॉरी तले हम प्लस एच एक्स थिला एक्स जगह हमर एच पड़ुची हाँ तो माइनस f0 इज 1 ओके डिवाइडेड बाय एच सो अगर हमें एलसीएम नबा लिमिट h टेंड्स टू 0 तो एलसीएम नला पर नीचे हम h स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर माइनस h ओके एबे आर लिमिट बाहर करिया पे जदि डायरेक्टली वैल्यू पुट करचे ये भी 0/0 होची तो एठी हमें अगेन अप्लाइंग द एल हॉस्पिटल रूल लिमिट h टेंड्स टू 0 वन डेरिवेटिव 0 तो माइनस ये माइनस प्लस e टू द पावर माइनस h तो -1/2h एल हॉस्पिटल रूल एबे जदि डायरेक्टली वैल्यू पुट करछे ये भी सेमती 0/0 होची तो अगेन अप्लाइंग द एल हॉस्पिटल रूल लिमिट s टेंड्स टू 0 आर डेरिवेटिव होची माइनस e टू द पावर माइनस h डिवाइडेड बाय 2 एल हॉस्पिटल रूल सो एबे डायरेक्टली वैल्यू पुट करले दिस वैल्यू इज -1/2 तो एल एस डी हमें बाहर करते ले सी बेस -1/2 आर एस डी भी -1/2 दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x equal to 0 hence एल एस डी equal to आर एस डी so fx is differentiable at x equal to 0 तो आम एक्सरसाइज रो समस्त क्वेश्चन कंप्लीट करदेले जदि भी किसी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन रे रिप्लाई कले मु तार आंसर देबी थैंक यू।